लेख्नको लागि तयार हुनुस्। अब पहिलो लेख्नुस् होम ट्याब। पहिलो लेख्नुस् होम ट्याब। अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् क्याटेगोरिज अफ होम ट्याब। क्याटेगोरिज अफ होम ट्याब। अर्को लाइनमा लेख्नुस् 1 नम्बरमा अथवा माइनस दिएर लेख्नुस् क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड। अर्को लाइनमा फन्ट। फन्ट। अर्को लाइनमा प्याराग्राफ। प्याराग्राफ। अर्को लाइनमा स्टाइल। अर्को लाइनमा स्टाइल। अर्को लाइनमा एडिटिङ। एडिटिङ। अब फेरि अर्को लाइनमा लेख्नुस् हेडिङको रूपमा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड भनेको के हो त? क्लिपबोर्ड को बारेमा It is a place where copied and cut content will be stored. लेख्नु होला। It is a place where copied and cut content will be stored. It is a place where copied and cut content will be stored. त्यस्तै गरी फुल स्टप It contains the following commands. It contains the following commands. अर्को लाइनमा लेख्नुस् copy and paste. Copy and paste. Copy and paste. Cut and paste. Cut and paste. अर्कोमा फर्म्याट पेन्टर। फर्म्याट पेन्टर। अर्को लाइनमा लेख्नुस् कीबोर्ड सर्टकट। कीबोर्ड सर्टकट। अर्को लाइनमा कपी। कपी को सर्टकट के हो त त्यो लेख्न खोज्दैछौं। कपी दिनुस् अनि एरो दिनुस् ctrl plus c। ctrl plus c। अर्को लाइनमा कट एरो दिनुस्। कट एरो दिनुस् ctrl plus x। ctrl plus x। पेस्ट अनि एरो दिनुस्। पेस्ट अनि एरो दिनुस् ctrl plus v। ctrl plus v। अर्को लाइनमा फर्म्याट पेन्टर कपी। अर्को लाइनमा लेख्नुस् फर्म्याट पेन्टर कपी। त्यसको एरो दिएर लेख्नुस् ctrl plus shift plus c। ctrl plus shift plus c। त्यस्तै गरी फर्म्याट पेन्टर पेस्ट। फर्म्याट पेन्टर पेस्ट ctrl plus shift plus v। ctrl plus shift plus v। अब अर्को लाइन लेख्नुस् font फन्ट। font फन्ट ड्यास दिएर लेख्नुस् It contains the following commands.
it contains the following commands. Full stop. अर्को लाइनमा लेख्नुस् बोल्ड कमा इटालिक कमा अंडरलाइन बोल्ड कमा इटालिक कमा अंडरलाइन कमा सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कमा सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कमा increase font size increase font size कमा decrease font size decrease font size font name comma font name comma font style comma font style comma etc etc full stop कीबोर्ड सर्टकट अर्को लाइनमा लेख्नुस् बोल्ड ctrl plus b बोल्ड ctrl plus b अर्को लाइनमा इटालिक ctrl plus i इटालिक ctrl plus i अर्को लाइनमा अंडरलाइन ctrl plus u अंडरलाइन ctrl plus u अर्को लाइनमा डबल अंडरलाइन ctrl plus shift plus d ctrl plus shift plus d superscript ctrl plus shift plus plus ctrl plus shift plus plus subscript ctrl plus equal to त्यस्तै अर्को छ increase font size एरो दिएर लेख्नुस् ctrl plus shift plus greater than ctrl plus shift plus greater than अथवा or ctrl plus big bracket close ctrl plus big bracket close त्यस्तै decrease font size एरो दिएर लेख्नुस् ctrl plus shift plus smaller than ctrl plus shift plus less than or अथवा ctrl plus big bracket open ctrl plus big bracket open त्यसै अर्को छ प्याराग्राफ अर्को लाइनमा लेख्नुस् हेडिङको रूपमा प्याराग्राफ एरो दिनुस् it contains the following commands full stop left alignment comma right alignment comma center alignment comma justify alignment comma bullets comma numbering comma paragraph shading comma paragraph border comma
टेक्स्ट शेडिङ कमा टेक्स्ट बोर्डर etc टेक्स्ट बोर्डर कमा etc फुल स्टप। अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् कीबोर्ड सर्टकट कीबोर्ड सर्टकट अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् लेफ्ट अलाइनमेन्ट ड्यास दिएर लेख्नुस् CTRL प्लस L राइट अलाइनमेन्ट CTRL प्लस R सेन्टर अलाइनमेन्ट CTRL प्लस C जस्टिफाई अलाइनमेन्ट CTRL प्लस J यति नै।